बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए सेहत की नासाजी की वजह से आप लोगों के साथ इतने दिनों तक लिंक नहीं रहा। अब कुछ तबीयत बहाल हुई तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और एक आध पोइम के हवाले से बात भी कर लेते हैं। तो आज हम जो बात करने लगे हैं वो है पोइम टाइम। मुख्तसर सी पोइम है, शैली की पोइम, तो उसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। टाइम पोइम जो है contains an almost cruel irony as it talks of the perilous nature of the sea, and it would later transpire Shelley himself would lose his life whilst at sea. Shelley probably spent a lot of time at sea and so was all too familiar with its perils. The poet personifies and then vilifies the ocean. This is a dramatic and striking poem. The sea is frequently a topic covered in poetry. It is an area that is still largely unexplored and contains many mysteries. It is also steeped in folklore and mythology. Deaths that have occurred at sea is massive. There is a reason that phrase was things happen at sea exists. With that in mind, it is no surprise that Shelley chose this topic to write a poem about. पोइम की फॉर्म एंड टोन के बारे में अगर बात करें तो द पोइम इज़ अ फेयरली शॉर्ट पीस. इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 स्टांजास which both consist of 5 lines each. The poem then is written in free verse. Each of the lines consists of 10 syllables. This level of accuracy was a calling card of Shelley in his work. The rhyming scheme alters in the first and second stanzas. In the first stanza, the pattern is AB AB. In the second stanza, the pattern is AA BB. Perhaps this is used as a device to represent the turbulent nature of the seas. तो आइए पहले स्टांजा की तरफ चलते हैं, उसकी लाइंस को देख लेते हैं, फिर उनकी इलेबोरेशंस देख लेंगे. फर्स्ट स्टांजा, फर्स्ट लाइन, अनफैथमेबल सी हुज वेव्स आर यर्स. फैथमेबल कहते हैं जी ऐसी चीज़ जिसको अभी मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर ना किया गया हो या अंडरस्टैंड ना किया गया हो. यानी ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई राज जिसको मुकम्मल तौर पर फाइंड आउट ना किया गया हो और अभी उसको मुकम्मल तौर पर समझा भी ना गया हो. यानी समंदर एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको क्या नहीं किया जा सका, अभी तक एक्सप्लोर मुकम्मल तौर पर नहीं किया जा सका और अंडरस्टैंड भी नहीं किया जा सका. कितनी लाइव्स जो हैं समंदर में ख़त्म हुई, वो किधर गई कोई पता नहीं है. हुज वेव्स और यर्स, सालों से वो इंसानों को निगलता जा रहा है, इनकल्प किए जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती, फिर भी उसकी भूख ख़त्म नहीं होती. अभी तक चीज़ों को, अभी तक इंसानों को क्या करता जा रहा है, निकलता जा रहा है. ओशन ऑफ टाइम, समंदर का टाइम, यानी टाइम का समंदर, पूरे का पूरी एक तारीख उसके अंदर रकम है. हुज वाटर्स ऑफ डीप वू
जिसका वाटर जो है, जिसकी लहरें जो हैं ऑफ डीप, वो गहरी गहरी हैं, और ब्रैकिश विद द सॉल्ट ऑफ ह्यूमन टीयर्स, और ब्रैकिश वाटर स्लाइटली साल्टी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत नमक पाई जाती है, उसको ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। विद द सॉल्ट ऑफ ह्यूमन टीयर्स, जिस तरह से इंसानी जो आंसू हैं वो नमकीन यानी उसमें वो पाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से ब्रैकिश है क्या चीज जी, समंदर का पानी भी। द शोरलेस फ्लड, पानी का जो बहाव है उसका किसी किस्म का कोई भी एंड नहीं है। विच इन द एब एंड फ्लो, द मोमेंट ऑफ टाइड, यानी कहीं तक भी उसकी क्या चीज होती है जी, लहरें पहुंच जाती हैं। क्लास बेस्ट, बिल्कुल क्लोजली क्या किया गया है, होल्ड किया गया द लिमिट्स ऑफ मॉर्टेलिटी, ह्यूमन लाइफ को, इंसानी जिंदगी को क्या किया गया है जी, उसके अंदर क्लोजली उसके साथ जोड़ा गया है। अब अगर जरा सा इसका इलेबोरेशन देखते हैं, व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ द पोएम। शैली टेक्स a romantic approach to the poem by personifying nature, in this case the sea, which he addresses as if it were a person। बिल्कुल ऐसे मुखातिब हो रहा है उससे जैसे किसी इंसान से मुखातिब किया जाता है। This effect is quite striking and dramatic, और ये जो इफेक्ट है वो क्या करता है, quite striking, अपील करने वाला, and dramatic और ड्रामेटिक है। He refers to the sea as unfathomable, suggesting that it has secret, इसके अंदर क्या चीज़ है जी, बहुत सारे सीक्रेट हैं दैट पीपल हैव बीन अनेबल टू फिगर आउट, जिनको लोग बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते। द सेकंड सेक्शन ऑफ द फर्स्ट लाइन इज रियली इंटरेस्टिंग, इट रेफर्स टू द वेव्स ऑफ द सी एज ईयर्स। रेफर्स क्या करता है, वेव्स को ऑफ द सी, समंदर को, ईयर्स के साथ क्या करता है, रेफर करता है इसको। व्हाट इज दिस मेंट टू मीन, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इज द सजेशन देयर, यहां पर ये एक ऐसी सजेशन हो सकती है दैट द क्रैशिंग ऑफ वेव्स रिप्रेजेंट्स द पैसेज ऑफ टाइम, किस चीज को वक्त गुजरने के साथ साथ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो वेव्स होती हैं जैसे आगे की तरफ आती हैं फिर वापस पलट जाती हैं, तो ये हो सकता है क्या चीज हो जी, क्रैशिंग ऑफ वेव्स जो है रिप्रेजेंट्स कर रही हूँ किस चीज को, द पैसेज ऑफ टाइम, गुजरते वक्त को। दिस इज क्वाइट अ स्टार्टलिंग मेटाफोर, हो सकता है हैरान कुन ये बात जो है, मेटाफोर भी हो सकता है, एंड वन दैट जनरेट्स, क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, एज मैनी क्वेश्चन एज आंसर, जितने सवाल उसके उतने ही जवाब। इट इज दिस सेंस ऑफ इंट्रीग दैट मेक्स दिस पोएम एंड मैनी ऑफ शेलीज पोएम्स सो कंपेलिंग। द सेकेंड लाइन टॉक्स ऑफ ओशन ऑफ टाइम, this is yet another reference to the sea and time. Maybe the suggestion is that the sea is eternal, everlasting, therefore it can be intrinsically natural way में link कर रहा है किसके साथ जी, with time के साथ। It then describes the sea's water as being of deep blue. The reason for this will become clear as the poem develops. जैसे जैसे पोइम को हम आगे की तरफ लेके जाते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्या होती चली जा रही हैं, क्लियर और वाशगाफ होती जा रही हैं, मैनिफेस्ट करती जा रही हैं अपनी अपनी चीज़ों को। द थर्ड लाइन क्या करती है जी, मेक्स रेफरेंस टू द सीज ब्रैकिश waters. Brackish, slightly salty, isn't a word commonly used. Brackish water is ostensibly water that has a higher salinity than fresh water, but not as high as sea water. It is often found near river mouths, although I think there is, यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है, here it is used just to describe salty water in general. It continues to say that saltiness is caused by human tears. This is a very powerful metaphor and gives us a hint as to the narrator's views on the perils of the ocean. कितना खतरनाक किस्म का ये समंदर है, क्या नाम है उसका पानी जो है। At the start of the fourth line, the narrator uses the word thou. Thou, this is an archaic word
and is seldom used in modern English. Roughly speaking, it is like an old version of the word you, or in this case your. This line describes a shoreless flood. The idea of the ocean being shoreless once again gives the impression that sea being eternal. This is a recurring notion up until this point, although is not mentioned after this. The fact that the idea of the ocean being eternal has been referenced 3 times might be significant. There is rule called the rule of threes that says when you are repeating something 3 times is the optimum amount. Any more than this is and it can become trite. Perhaps this is why this was done. किसी भी चीज़ को 3 दफ़ा करने ये मैक्सिमम अमाउंट होता है. इसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ में क्या कर रहे हैं, या उसको कर रहे हैं या उसको नहीं करना चाह रहे. यानी अगर नफ़ी में होता है तो इसका मतलब यह है कि नहीं कर रहे, और जब पॉजिटिव में होता है हाँ तो इसका मतलब क्या होता है जी कि हम कर रहे हैं. तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है, 3 टाइम जो होती है वो हमारे किस चीज़ को, किसी भी काम को करने की सलाहियत बताती है. द फैक्ट दैट द आइडिया ऑफ द ओशन बीइंग इटर्नल हैज बीन रेफरेंस्ड 3 times might be significant. The 4th line runs on to the final line of the stanza and comments on the ebb and flow of the sea clasps at the limit of mortality. Once again, this is quite an evocative language and really is describing how the sea manages to attack mortality. This description almost makes out like the sea is the enemy of life, which is quite a blunt statement. डिस्क्रिप्शन क्या बताती है हमें कि असल में एनिमी है ऑफ लाइफ, जिंदगी को, विच इज क्वाइट अ बोल्ड स्टेटमेंट, जो एक शानदार किस्म का और एक बोल्ड किस्म का क्या चीज़ है जी, स्टेटमेंट है. द सी इज अबंडेंट विद लाइफ फॉर्म्स, but I think in particular this is an allusion to the impact of the sea on human life. सेकेंड स्टांजा की तरफ आते हैं, उनकी लाइंस को देखते हैं, फिर उनकी भी हल्की सी एलिब्रेशंस कर लेंगे. एंड सिक ऑफ प्रे येट हाउलिंग ऑन फॉर मोर. ये छोटे छोटे अल्फाज मैंने दे दिए हैं ताकि आप लोगों को मीनिंग में आसानी रहे. एंड सिक ऑफ प्रे येट हाउलिंग ऑन फॉर मोर. Vomitist directs on its inhospitable shore, treacherous in calm and terrible in storm, who shall put forth on thee unfathomable sea. In the first line of the second stanza, the sea is described as being sick of prey. The use of the word prey is particularly revealing here, as it suggests that the narrator views that sea is a predator, an animal that naturally preys on others. The fact that it is sick of it and still continues to search for more gives the ocean a greedy persona. इस तरह कोई शिकारी शिकार के पीछे भागता है और वो उसको अपने दबोच में लेकर ही दम लेता है, बिल्कुल इसी तरह समंदर जो है वो भी एक प्रीडेटर है और वो क्या कर रहा है जी, लाइव्स को, इंसानी जिंदगियों को अपनी दबोच में लेकर फिर क्या करता है जी, एक ग्रीडी नेचर पर्सन की तरह, एक ग्रीडी नेचर चीज़ की तरह से वो क्या कर रहा है, इन तमाम जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है. All of these descriptions build up a picture of the character that has been given to the ocean. The second line is particularly gruesome in its description, as the ocean is described as vomiting wrecks onto its shores. This almost creates the image of the sea gobbling down its victims and then spitting out the remains. जितनी खा सकता है उनको खा लेता है और बाकी जो चीज़ बच जाती है जिससे वो नहीं कर सकता, डाइजेस्ट कर सकता, तो वो उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल कर फेंक देता है.
Note how the shore is described as being inhospitable, another allusion to the lack of life. The penultimate line and final line of the poem asks the question of why the sea is like this, why it acts in that way. The poem is given a nice sense of symmetry by finishing on the same two words it started with. जिस तरह से शुरू हुआ था उसी तरह से ख़त्म कर रहा है इसको. This make it feel like the poem runs in a circle which would serve to emphasize the theme of eternity put forward in the poem. शायर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें. शैली जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स ऑफ ऑल टाइम. बोर्न इन द 18th century, he had a tragically short life, dying in 1822, एज जस्ट 29. बिल्कुल लाइफ जैसे कीट्स की लाइफ 26 और ये 29 है. ही ड्रॉन्ड एट सी हैविंग बीन ट्रैवलिंग इन हिज सेल बोट Don John, which was named as a nod to Lord Byron. ये भी शायर है उसी दौर का. Byron and Shelley had a close relationship, together with several other notable writers and thinkers of the time. They almost formed a group of sorts. Included in that group were the likes of Leigh Hunt, ये भी poet है, Thomas Love, and Shelley's own spouse Mary, इसकी बेगम मैरी शैली जो हैं उनके साथ जो है इनका सारा ताल्लुक था. Amongst the notable work are Ozymandias' Ode to the West Wind, to a Skylark, Music When Soft Voices Die, The Cloud and the Moss of Anarchy, but perhaps his most famous piece is Prometheus Unbound, which may scholars refer to as masterpiece. Although Shelley's poetry has stood the test of history during his life, it was not well received. Most publishers refused to touch his work as it was considered blasphemous. This is an indication of the ground-breaking nature of his poetry. Shelley was a specific and vegetarian, which fit well with his liberal views. These views were in themselves massive, inspirational, and had an influence on people such as Gandhi and Marx. तो ये थी आज की हमारी पोइम. इसके बारे में हमने बात की. सेहत के लिए दुआ की अपील करता हूँ आप लोगों से. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी, नेक्स्ट किसी लेक्चर में. तब तक अल्लाह हाफिज़.